joined the Speed app for preparing for NEET SS to think about doing MCH in Ops. So I joined the Speed. So I bring in all the wishes and greetings on behalf of all the faculty members of Speed Medical Institute to Dr. Ekta Rawat for scoring a very good rank number 98 in MCH OBG group. Thank, Congratulations to you, Doctor. thank you, sir. Great. Can we know your detailed background from where you started till date, what you have done? Sir, I did my MBBS in both MBBS and PG, State Medical College, Uttarakhand. And then after that, I joined SRCIP in the same college where I did the PG. In my first year SRCIP, I joined the Speed app for preparing for NEET SS. But that year, I did not give the exam. And then this year, it was my first attempt for NEET SS. But also, I am postpartum third month this time. I Oh, have a three month old baby. congratulations. Congratulations. Thank you, sir. So how is the baby doing? So now he is okay and sleeping. So I have to be full time with him, right? Yes, sir. Now I have full time. Before that, I was so worried about. Actually, I had my delivery on January 7th, and I am preparing before that. But after my delivery, 10 से 15 दिन मतलब रिकवर करने में मुझे लगा. सर फिर अगेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. So you are out of a patient mode, you became a doctor mode quickly. Yes. Huh? Quick switch over. Yeah, then you're on to the job. Hmm. Yes, sir. Because I also wanted to appear for this exam, sir. I congratulate you for your Thank dedication you. and the Thank you so job much. and be on focus and to balance both equally important at this point of Yes, time. sir. Yes, sir. It was very difficult that time because breastfeeding and to also give your time while studying and बेबी को भी टाइम देना दोनों ही मिक्स हो गया था काफी. Important point of your life, an important point in time वो between हाँ. यस सर एक टाइम तो मुझे लग रहा था मैं एग्जाम छोड़ दूंगी मतलब ठीक है इस बार बेबी पे ही ध्यान देती हूँ. in the crossroad, na? I mean, you यस can't say this is important, this is important, both are important. both are important. Yes sir. Huh? Yes, both are important for me and बीच में तो सर आई वाज क्राइंग कि मैं क्या करूं मतलब मुझे बेबी भी देखना है और पढ़ना भी है. इस बार होगा या नहीं होगा मतलब ऐसे चल रहा था दिमाग में होगा नहीं होगा करके कुछ समझ नहीं आ रहा था तो बट बस ये था कि सर नोट्स रिवाइज करें स्पीड. आपकी सारी वीडियोस मैंने जो लास्ट में ग्रुप में थी मतलब बिफोर एग्जाम जितनी भी थी मोटिवेशन की या क्या करना है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो सब देखा था सर. तो Yeah. Because non-medical people from outside do not understand this, and they'll always say uh, the baby is important because the baby is important, and यस the सर. more baby which is there inside of me, that is also important. I mean, huh? यस सर. So the baby of the career that I've grown, and that also be on appropriate. It has to be out on appropriate time as it is appropriate physically. यस सर. So, and I really appreciate and congratulate you have balanced both and you have done both successfully. That's what is more important. थैंक यू सर. I always tell those men who come to me and say I'm not able to do, I'm depressed and I'm low and all that. I always tell this. Do you what additional responsibility do you have other than to study? You, know- you, know- यस सर. you know what is about a family and what is about how important it is that to give birth to a child and to study यस. and to accomplish to take care of the family. I mean, what responsibility you have? Yes, and what bothers you much? And I mean, as a mother and as a woman, as you live in that, and then you let us know what it is all about. Yes, यस. यस. the role of a mother, the role of a wife, the role of a daughter-in-law, the role of a daughter. There's so many roles. Of course, uh, as men also have a role, but they're all very superficial. I'm telling you, on face, there's an interview actually. But they also supported me so much. Yes. They support, but this is not as stressful as that per person who's हाँ. undergoing. यस सर. There's a support from, I mean, as a person, as in a mind, as physical, that is different. But the person to undergo that is different.
So I Yes, sir. mean, this is a role model. This is a role modeling, and this is what we need to learn from people who are really dedicated for that, and really we sincerely appreciate for that. Thank you, sir. Okay, now let us go on to how you prepared, and let us. I mean, we can go on to that inside. Now you let us know. Sir, I heard about the coaching in my third year PG, but I did not join the Speed app that time. Then in my SRC first year, after doing the 6 month of SRC, I started to think about doing MCH in ops. So I joined the Speed app. Then I started preparing, and I made my notes, handwritten notes. I have my handwritten notes. And last year I did not gave the exam, and then this time I last year I gave the FET, fellowship entrance test exam, and I achieved 201 rank in that time. And after that, this year, sir, I continuously keep consistently uh, keep learning, keep doing my study for keep preparing. Then sir, फिर ये था कि नोट्स रिवाइज करती गई, और जो वीक था मेरा उसको भी पढ़ते गई साथ में। जो वीडियो मैंने कवर नहीं करी थी स्पीड से, वो सारे कवर करी। फिर उनके नोट्स मैंने बनाए सर। उसके बाद अभी के क्योंकि मेरा जो था अक्टूबर के बाद से सर, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो आई वॉज दैट टाइम 8 मंथ ऑफ 8 मंथ प्रेग्नेंट। देन आई अप टू डिलीवरी, डिलीवरी के एक दिन पहले तक मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ाई कर रही थी। फिर Hmm. सर वो डिलीवरी के मतलब डिलीवरी के बाद मतलब 10 दिन मैंने रेस्ट लिया, जो प्रॉपर रेस्ट, मतलब किताबों को छूना भी नहीं है, ये किया था सर। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद जब मुझे लगा हाँ अब मैं थोड़ा रिकवर कर रही हूँ, तो देन आई स्टार्टेड अगेन प्रिपेयरिंग, अगेन रिवाइजिंग द नोट्स। एंड लास्ट का जो 1 वीक था सर, उसमें सिर्फ मैंने जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो करे। सो सर, दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड। और मैं मतलब ऐसे सोच के गई थी कि बस हाँ मैं मुझे बस पढ़ना है, अभी कुछ नहीं पता क्योंकि बेबी भी देखना है, और रैंक देखी जाएगी जो आएगा, बस पढ़ के जाना है। और जैसा जैसा आप वीडियोस में बता रहे थे, बस मैं वैसे वैसा फॉलो कर रही थी कि हाँ मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। अगर मैं वो वीडियो भी नहीं देखती जो आपने लास्ट में कहा था कि हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, तो शायद मैं वो भी नहीं करती। तो मैं टारगेट लेके गई थी हाँ इस बार मैं 150 में से 149 या 150 तो करके आऊंगी। तो दैट्स हाउ इट वेंट सर। Great, great. Very, very nice. Very nice that I can see the kind of dedication and the love that you have for the subject and to go on from there. It's really wonderful. Now, what is the message that you want to give for those aspirants? One single message you want to tell them. What do you want? um, have faith on your studies, and hard work तो करना ही है। There is no substitution for hard work. You have to do hard work. You have to basic knowledge of all the your your subject, लाइक सर। लेकिन मैंने स्पीड के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब मैं सच बताऊं, मेरे पास मैंने कोई भी वैसे बुक्स नहीं पढ़ी है बड़ी बड़ी सी। मैंने सोचा मैं सुपर स्पेशलिटी में जाके तब वो बुक्स पढ़ूंगी। मैंने सिर्फ स्पीड के नोट्स पढ़े हैं, और बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैं तो सोचती हूँ कंटिन्यू करूंगी अगर मैं उसको आगे भी। तो सर मैंने कोई बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ी हैं। तो इस एक कोई भी जो कोचिंग है, जैसे मैं तो कहूंगी कि स्पीड बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको प्रिपेयर करना है। और सर टीचर्स आर वेरी गुड, रेवती मैम। Very nice, doctor. It's time to thank and whom all you want to thank. They helped you in a difficult period, tough period, and they were stood by you. And today, it means a lot to you. So you can use this platform to thank all of them. थैंक यू। No, you can thank. I mean, whomever you want to thank, you can सॉरी सर, thank. I wanted to thank to all the speed team. I mean Revati ma'am, all the reproduction side, reproduct teachers, all these, all are good sir। सर मैं तो पढ़ा ही स्पीड है, मैं सच बताऊं मैंने कोई भी बड़ी बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ नोट्स, सिर्फ स्पीड पढ़ा है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब मैंने ये बना दिया था स्पीड से कुछ बाहर आएगा तो अलग चीज है, लेकिन स्पीड के अंदर सारा वो मुझे कवर करना है। मतलब ये टारगेट था कि मुझे स्पीड के अंदर जितने भी सब मतलब जो उन्होंने पढ़ाया जितना भी वो तो नहीं छोड़ना है, जितने भी अपडेट्स हैं
उसके अलावा बाहर का आएगा तो ठीक है, वो मैं नहीं जानती हूँ उसको, मैं उस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगी। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो स्पीड में ना पढ़ाया हो। We once again wish you all the very best and all the success. Whatever you थैंक यू। wish that you want to do, all will happen. And for that, advance wishes and congratulations. थैंक यू सर। Thank you. All the best.